Chapter 3, An Economy, its sector, basic concepts and entities. We are going to discuss MCQs on this topic also. So question 1 is, the primary sector of economy is mainly concerned with, primary sector किससे concerned होता है? Manufacturing से, extracting natural resources से, providing services या trade and services. So the correct answer will be extracting natural resources. Option number B. Next question. Question number 2. Tertiary sector is also called agriculture sector, service sector, manufacturing sector or industrial sector. So tertiary sector is related with service sector. The correct answer is option number B. Question 3rd is, human wants are limited in number, unlimited in number, fixed and same for all, only material in nature. So human wants क्या होती हैं? Human wants are unlimited. So the correct answer is option number B. Question 4th है, which of the following is not an economic good? Air, bread, clothes, furniture. So कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, air is not an economic good. Question number 5th, utility in economics refers to usefulness in ordinary sense, power of goods to satisfy human wants, market value of product, quantity of goods produced. So the correct answer is utility means want satisfying power of a good. Correct answer is option number B. Question number 6 is, the total satisfaction obtained from consuming all units of good is called. Total satisfaction किससे मिलता है? Total utility से. Next, question number 7. Marginal utility refers to extra satisfaction from additional unit of a commodity, total satisfaction from all unit, declining usefulness of wealth and utility of free goods. So marginal utility is always related with one additional unit. So यहाँ पे इसका correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer will be A, extra satisfaction from additional units of good. Action in economics means making goods only, creation of material wealth only, creation of goods and services for satisfaction of wealth, and D is manufacturing of factories only. 8 का correct option will be C, कि production in economics means creation of goods and services for satisfaction of wants. Next, question number 9th. Consumption in economics means using goods and services to satisfy wants, wasting resources, producing goods for market या savings income for future. Consumption economics में किसको बोलते हैं? So the correct answer will be option number A, using goods and services to satisfy wants. So उसको हम क्या बोलते हैं? Consumption. Next is propensity to consume. Propensity का मतलब क्या होता है? Tendency. Tendency to consume refers to A, ratio of income spent on consumption, ratio of savings to income, desire to consume unlimited wants, and D is total expenditure on luxury goods only. So the correct answer will be रेशियो ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन. कितना हमारी क्या टेंडेंसी है कंज्यूम करने की, इसको हम कैसे चेक करते हैं? रेशियो ऑफ इनकम, कितनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं हम कंजम्पशन में. क्वेश्चन नंबर 11. Aggregate consumption means individual spending only, total consumption expenditure of an economy, consumption of luxury only, and household expenditure on durable goods. So 11th का आंसर क्या होगा? 11th का आंसर will be total consumption expenditure of an economy. So aggregate consumption means total consumption expenditure of an economy. Next question is sustainable consumption. Sustainable consumption refers to unlimited use of resources for growth, wasteful use of natural resources, consumption that meets present needs without harming future needs. Sustainable consumption क्या होता है? करंट यानी करंट जो जनरेशन है उनकी नीड्स तो फुलफिल करे लेकिन इट शुड नॉट इफेक्ट और हैम्पर द फ्यूचर नीड्स ऑफ द पीपल. यूजिंग ओनली रिन्यूएबल energy resources. The correct answer will be option number C. Next question is question number 13. Which of the following is a primary activity? So the primary options are banking, fishing, textile industry and transport. Primary activity क्या होगी? Fishing. Next question number
14. Manufacturing industries comes under primary sector, secondary sector, tertiary sector and none. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आती हैं? comes under secondary sector. Now question number 15. Which services is part of tertiary sector? एग्रीकल्चर प्राइमरी से रिलेटेड है, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, बैंकिंग प्रोवाइड सर्विसेज. जो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. Question number 16. Which of the following is not a characteristics of wants? Wants are unlimited, same intensity, competitive and recurring. So the correct answer will be answer number B. Next, question number 17. Social customs and advertisements influence the primary need, physical need, formation of wants, the utility of want. So correct answer will be option number C, formation of wants. Social custom से ही मेरी क्या होती है? Wants की creation होती है. Food, clothing and shelters are प्राइमरी वॉन्ट्स, सेकेंडरी वॉन्ट्स, लग्जरीज और कंफर्ट. तो ये तीन मेरी बेसिक वॉन्ट्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉन्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. वॉन्ट विच अराइजेस आफ्टर सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, प्राइमरी वॉन्ट्स, सेकेंडरी वॉन्ट्स, नेसेसिटीज और दैट ऑप्शन इज D. So the correct answer will be B. Primary wants fulfill यानी basic needs fulfill होने के बाद मेरी secondary wants create होती हैं. Question number 20. Air and sunlight are examples of economic goods, free goods, producer goods and private goods. तो इन चारों में से कौन सा correct option होगा? Option will be option B. These are the free goods. Question number 21. Machinery used in factory is consumer goods, producer goods, public goods और durable goods. 21 का आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि मशीनरी हम कहाँ यूज कर रहे हैं? फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं. दीज विल बी द प्रोड्यूसर गुड्स. ये फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होगी. क्वेश्चन नंबर 22. गुड्स यूज डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, final goods or producer goods. So the correct answer will be consumer goods. Consumer goods are those goods which are directly used by consumer for satisfaction of their wants. Next, question number 23. Roads and street lights are private goods, public goods, free goods or durable goods. So the correct answer will be option number B. Roads and street lights are public goods. Next, question number 24. Which goods lose value after single use? Durable goods, non-durable goods, final goods or producer goods. So the correct answer will be non-durable goods. एक ही बार यूज हम कर सकते हैं. These are the non-durable goods. Next is question number 25. Which of the following is a feature of services? Tangible, no. Visible, no. Perishable or stored for future. So the correct answer will be option number C. यानी features of services includes perishable. They are intangible. We cannot see them and they cannot be stored for future also. Next is question number 26. Wealth owned by an individual is called national wealth, पर्सनल वेल्थ, सोशल वेल्थ और कम्युनिटी वेल्थ. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोई एक इंडिविजुअल जो वेल्थ ओन करता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्सनल वेल्थ. एक इंडिविजुअल की वेल्थ को बोलते हैं पर्सनल वेल्थ. क्वेश्चन नंबर 27. वेल्थ दैट बिलोंग्स टू द होल कंट्री इज पर्सनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ और पब्लिक गुड्स. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? होल कंट्री की बात हो रही है. तो नेशनल वेल्थ इज द वेल्थ दैट बिलोंग्स टू होल कंट्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट इज कॉल्ड वैल्यू, प्राइस, यूटिलिटी और वेल्थ. तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. Want satisfying power of a commodity is called utility.
Next, question number 29. Transformation of wheat into bread creates, क्या कर रहे हैं, व्हीट को हम ब्रेड में चेंज कर रहे हैं. इज इट क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी? यहाँ पे व्हीट का पूरा फॉर्म ही चेंज हो रहा है ब्रेड पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी और नन. ट्रांसपोर्ट किस लिए हेल्प करता है, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं, यानी इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी. Question number 31. Production refers to creation of matter, creation of utility, creation of wealth only, consumption of goods. So the correct answer will be option number B. Production refers to creation of utility. Question number 32. Propensity to consume means desire to produce more, desire to save more, desire to spend on consumption, or option number D, none. So the correct answer will be option number C. Propensity to consume means desire to spend on consumption. Question number 33. Which of the following is a feature of sustainable consumption? Misuse of resources, wastage of resources, meeting present need without harming future, or ignoring environment. So the correct answer will be option number C. Meeting present need without harming future needs. Next one is question number 34. Which is not a characteristics of land? Immobility, limited supply, man-made, or free gift of nature. So the correct answer will be option number C. Land is not man-made. Next, question number 35. Which of these is a characteristics of labor? Perishable, can be stored, mobile, both A and C. So perishable and mobile. So the correct answer will be option number D. Question number 36 is, which is a feature of capital? A, passive factor, man-made, mobile, or D, all of these. So the correct answer for capital is all of these. Question number 37. Human capital refers to machine, skilled and education of people, money and land. तो इन चारों में करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्किल्ड एंड एजुकेशन ऑफ people. So the correct answer will be option number B. Next, question number 38. Example of fixed asset: raw material, cash, building, or fuel. So the correct answer will be option number C. Building is an example of fixed asset. Next, example of circulating capital: machinery, tools, raw material, or building. So circulating capital का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. raw material is a circulating capital. Next, question number 40. The term market in economics means place where goods are bought and sold, only physical shop, arrangement where buyers and seller interact, or D, none. तो market कौन सी place हो गई? Market can be in physical form or can be an online. So it can be the arrangement where buyers and sellers interact. So correct answer for option will be option C for question number 40. Market is a place where there is an arrangement of buyers and sellers to interact. Perfect competition in a market is one seller, few seller, and many buyers, or only one buyer. So the correct answer for option number 42 will be C. Perfect competition वहां पे होगा जहां पे बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होंगे. Question number 43. Value in exchange means utility of goods, worth of goods in terms of money, personal satisfaction, और नन. तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी. वैल्यू इन एक्सचेंज मीन वर्थ ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी. जो एक्सचेंज करके हमको इन टर्म्स ऑफ मनी अमाउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. व्हेन वी मेजर गुड्स इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज कॉल्ड प्राइस, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, और नेशनल वेल्थ. सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए. Next question will be question number 45. Next one is question number 45. Per capita income equals to option A, total income upon
पॉपुलेशन, नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन, नेशनल इनकम माइनस सेविंग्स, और डी नन। सो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द इंटायर पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम मेरी आ जाएगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट question number 46 and the last question. The part of income not spent on consumption is saving, investment, utility or profit. So the correct answer will be savings. इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं किया है उसको हम क्या बोलेंगे, सेविंग्स।